हेलो गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत। गाइस, आईओटी से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं और जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो रेस्ट ऑफ द वीडियोस भी विजिट करिए, राइट, ताकि ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस: फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, थिंग्स इन आईओटी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओटी डिवाइसेस, राइट। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। फिजिकल डिजाइन का क्या मतलब होता है कि जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं या आईओटी का पूरा सिनेरियो होता है या पूरा आर्किटेक्चर आप कह सकते हो होता है, तो व्हाट इज द फिजिकल डिजाइन, उनमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, पूरा आर्किटेक्चर, जो वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, यू कैन से दैट इज नोन एज फिजिकल डिजाइन ऑफ द आईओटी सिस्टम। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, refers to the IoT devices and IoT protocols, right? Means physical design में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, right? IoT devices as well as IoT protocols. Protocols means rules. IoT devices means the devices which are taking place to form IoT. There are node device which have unique identities and can perform remote sensing, actuating and monitoring capabilities. Means various types of devices here which have unique identities. Unique identities means through which they can be uniquely accessed and can perform different types of tasks just like sensing, actuating and monitoring capabilities, right? Communication established between things and cloud-based server over the internet by various IoT protocols. Means communication establishment जो होता है things between things and cloud based servers. Things means devices, right? Things का क्या मतलब होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे। Things means IoT devices means which are taking place in the whole system, that is known as things. Different types of devices in the IoT and cloud based servers over the internet, and server say over the internet by using various IoT protocol. इंटरनेट के माध्यम से various IoT protocol का यूज करके, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फिजिकल डिजाइन है वहां पर एक्चुअली क्या क्या चीजें होती है, कई जो वेरियस टाइप्स ऑफ IoT डिवाइसेस होती हैं। IoT डिवाइसेस में बहुत सारी कैटेगरी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हो सकती हैं, अभी हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज द IoT protocols makes a design for the IoT, right? Okay. थिंग्स इन द IoT। थिंग्स जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, थिंग्स, व्हाट इज थिंग्स इन IoT। जैसे कि आप देख रहे हैं कि थिंग्स refers to the IoT devices. IoT devices are actually the things which have unique identities, जिनका की कुछ unique identity होता है and can perform remote sensing and that perform different types of tasks just like remote sensing, actuating and monitoring capabilities. Things is main part of the IoT application. Things means devices, various types of devices that are more important main part of IoT applications, right? IoT devices can be various type. IoT devices different type की हो सकती है, right? कौन कौन सी हो सकती है, just like sensing devices, right? Sensing devices means जो sensors होते हैं जो sense करते हैं environment से जो data sense करते हैं, smart watches, right? Smart electronic application, ठीक है। इसी तरीके से wearable sensors and automobiles. These devices generate data in some forms. These devices generate data generate करते हैं कुछ फॉर्म में,
right? Or the other which, when processed by the data analytics system, leads to useful information to guide further action locally or remotely. तो जो भी ये थिंग्स एक्चुअली है क्या, थिंग्स मीन्स जो IoT डिवाइसेस हैं, दैट इज आल्सो नोन एज थिंग्स, राइट? ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर एक रूट डायग्राम, एक रूट डायग्राम, आप ब्लॉक डायग्राम आप देख पा रहे हैं ऑफ IoT डिवाइसेस, राइट? तो ये एक IoT होल सिस्टम है जिसमें कि आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यहाँ पर है, मीन्स कनेक्टिविटी डिवाइसेस हैं, एक्सेसरीज में कनेक्टिविटी डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस भी हैं, मेमोरी डिवाइसेस भी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी हैं, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स एक्चुअली. First is data processor, just like central processing unit, and second type of processors just like graphic processors, right? Means graphic processing unit, right? And different types of audio video interfaces just like HDMI 3 and RCA videos, SDMMC, and storage devices, these are actually. And different types of input output interface sensors, input output interfaces. Input output interfaces means different types of sensors and actuators, right? These are actually comes in the category of input output जो है interfaces, right? तो one by one we have to discuss these different devices, right? तो okay, as you know in this diagram what there are different things that you see. IoT devices in the above diagram, it consists of several interfaces for connections to other devices, right? IoT devices has input output interfaces, okay, for sensors, as well as storage and audio video devices, just like here. Input output interfaces, it includes sensors, actuators, right? Connectivity devices, just like you can say USB host, RJ45 Ethernet, right? Storage devices, you know, you just see DDR RAM, right? Different versions 1, 2 and 3. And processors just like central processing unit and graphic processing units, right? So there are different types of input output IO interface for sensors. Similarly, storage and audio video devices, right? And these devices known as platform, right? These devices known as platform, yeah, you can say IoT platform, right? Means combination of these devices actually known as IoT platform, right? Which makes whole platform, whole you can say environment, yeah, whole system of the IoT, right? Okay, so in this diagram you can see different types of devices. So you have to, in this slide you have to study one by one means what type of devices perform which type of tasks. Just you see in the picture, first is USB host and RJ45 devices, right? In this slide जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं USB host या USB devices, universal serial buses एक्चुअली. तो USB डिवाइसेस का एक यहाँ पर रफ डायग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा है. एंड USB host helps to connect different USB devices, right? USB host helps to connect different USB devices such as flash drive, right? USB keyboard or mouse. USB host ports are the ones which are available in our laptop or desktop computers. You just already see the USB ports in which different types of USB devices just like keyboard and mouse can be implemented.
नेक्स्ट डिवाइस दैट इज रजिस्टर्ड जैक या RJ45। जैसे कि आप यहाँ पर एक 45 कनेक्टर देख पा रहे हैं। RJ45 is a standard physical network interface for connecting telecommunication or data equipment, right? ये एक this is just like a connecting interface for the cables to another devices, right? Next, DDR-RAM. DDR synchronous dynamic random access memory, SDRAM. It is a device, hardware device that is actually used to store the data, right, temporarily. And different types of different versions of the DDR can be used for the different tasks purposes, right? And these are integrated circuits. Next, and IoT processors. IoT processors, not to be confused. Just in this diagram, you can see IoT processors, right? Processors actually can be divided in two categories. First is data processors, the second is graphic processors, right? So processors, you just see here is not to be confused with the system on a chip, which contain a radio chip, right, memory and processors, and connectivity all bundled up into one piece of silicons, right? So these are different things which are connected to each other and bundled up into one piece of silicon, just like you can see here, right? Next, a graphic processing unit is a specialized electronic circuit. It is a GPU. You can say GPU, and you can see this in this diagram. It is also an electronic circuit designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer, right? Actually, this type of processor works with the pictures and graphics, right, to process picture and graphics. Uh, Next, high definition multimedia interface. High definition multimedia interface, right, is a connector and cable capable of transmitting high quality and high bandwidth stream of audio and video between devices, right? So HDMI is a connector and cable, just you can see in the figure, for the transmission high quality and high bandwidth stream, means through which you can transmit high quality and high bandwidth stream of data. The data may be audio data, or you can say let's say video data from one devices to another devices, right? Just you can see in the in this figure. Okay, so this was different devices which makes IoT systems, holds IoT systems, or you can say different units in the IoT system, right? तो इस तरीके से आपने देखा कि different डिवाइसेस यहाँ पर किस तरीके से IoT प्लेटफॉर्म क्रिएट करती हैं, राइट? तो इस तरीके से आई थिंक एक इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक ये समझाने की कोशिश किया हुआ है कि फिजिकल डिजाइन ऑफ द IoT सिस्टम है क्या, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय थिंग्स इन द IoT, क्लियर? एंड विच टाइप ऑफ डिवाइसेस मेक्स takes place to form the IoT platform, right? या IoT infrastructure, clear? Okay guys, आज के लिए इतना ही. Okay, and rest of the topic we will discuss in the next video. Okay, thank you, thanks for watching.